रामचरितमानस इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये देखने वाले हम। सो ये क्या है, इसको देखेंगे, ये क्या मेमोरी रजिस्टर की बात करी जा रही है ये देखेंगे, और रामचरितमानस को यहाँ पे इनको लेकर क्यों बात करी जा रही है वो देखेंगे। देखो, नाउ देर इज अ यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, MOWB से कहा जाता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। In this memory of the world register, some of the best literary works from all over the world, they are basically preserved। क्योंकि देखिए ये कहा गया कि हमारी लैंग्वेजेस जो है हम इनको भी भूलते जा रहे हैं, ठीक है, दे आर बीइंग वैनिश्ड। Similarly, our literary works, they are also being vanished. So UNESCO basically is an organization which focuses upon cultural and the education advancement, largely the cultural advancement. So they are saying कि we focus on the literary work wherever we find a literature which is very important from a country and which has worldwide implication. We mention that literature in our list so that the importance of that literature should be there. क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे, लिस्ट में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है आज नहीं तो 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, मे बी आफ्टर 1000 years वी माइट फॉरगेट दैट लिटरेचर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ लिस्ट एंड दैट लिस्ट इज नोन एज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर, ठीक है। एंड रिसेंटली इसके अंदर रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहेद्रलोकालोचन, 3 important works from India, they were added. Now this is important for us because it has happened for the very first time that we asked UNESCO, or rather we nominated 3 of our literature so that they could be added in this. इससे पहले हमने कभी नहीं किया। Now they have been asking for such names since 2004, but in 2024 it is for the very first time we sent 3 nominations and all the nominations were accepted by UNESCO. And let me tell you, in UPSC, when the things happen for the first time like this, they become important for the exam, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, रामचरितमानस, पंचतंत्र, and then we have सहेद्रलोकालोचन, they were added to UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register during the 10th meeting of the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific, MOWCAP, held earlier this week in Ulaanbaatar, मंगोलिया के अंदर ये हुआ, ठीक है। वहां पर वी हैव एडेड दीज 3 वर्क्स। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। व्हाई दीज यू कैन से इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स वर एडेड, वो भी हम देखेंगे, बिकॉज देयर मस्ट बी सम रीजन टू ऐड द सेम, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। This is the first time since MOWCAP was formed in 2004 that India has sent any nomination. जैसे मैंने आपको बताया था, after 20 years we have sent some nomination and all the nominations were accepted, ठीक है। And therefore Ministry of Culture is very very happy with this development, ठीक है। अब basis क्या होता है? What is the base? What is the base of adding one literature over another? They say the major aspect is that it should be a famous literature from a particular region. At the same time, it should have the worldwide implication. Similarly, they have said, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, when we talk about रामचरितमानस, now when we talk about रामचरितमानस, it is not confined to India. आपको क्या लगता है कि रामचरितमानस सिर्फ इंडिया में पढ़ी जाती है? When we talk about रामचरितमानस, then it is not only read in India, it is quite famous in many Asian countries, Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka. These are the locations where people read रामचरितमानस। फिलीपींस के अंदर भी, even in the Central Asian countries like उज्बेकिस्तान में भी, this is quite famous. That's why it has its importance, ठीक है। सेकंड, पंचतंत्र को बताया कि why पंचतंत्र is important. They have said पंचतंत्र is important because the stories which are given in पंचतंत्र, they have ethical and moral lessons, and these ethical and moral lessons, they have worldwide application. So if a person is reading that story in India, or a person is reading that story in America, or a person is reading that story in China, they will have the same meaning, they will have the same, they will able to figure out the same conclusion from the ethics and the moral perspective. So to make a person a better person, these stories are important, and therefore that particular पंचतंत्र को भी ऐड किया गया है, ठीक है। देन तीसरा नाम हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखिएगा, सहेद्रलोकालोचन, JNK का लिटरेचर है, तो इसको क्यों ऐड किया गया, यहाँ पर बताया गया। नाउ दिस लिटरेचर इज एडेड बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक ब्यूटी, ठीक है। एस्थेटिक ब्यूटी, stories which have larger implications and applications, because Ramcharitmanas is read in other countries too. That's why these 3, you can say, literatures were added, ठीक है। समझ में आया? मेन टास्क क्या है? May 2023 there are 494 inscriptions. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से ही है, even this year 20 literary works were added in this
एंड 3 वर एडेड फ्रॉम चाइना, 2 वर एडेड फ्रॉम इंडोनेशिया, हमारे यहाँ से भी 3 को ऐड किया गया, ठीक है, बट बिकॉज इट हैज़ हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट्स वाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।